Hello everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concepts. Let us for now navigate to this center of mass and collision question taken from the book SPT. The question is very basic, I would say. If you know basics of center of mass and collision, specifically collision concept, then you can easily crack this question. Okay? So I would highly suggest you to read the question first and try solving it on your own. Okay? That will definitely help you in बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन को खुद से करते हो एंड इवन इफ यू रीच हाफ द वे दैट एक्चुअली एड्स टू योर कॉन्फिडेंस यू मस्ट बी नोइंग इट better than me. Anyway, let us start with reading the question. A heavy ball of radius r is traveling on a smooth horizontal surface with a velocity u naught towards the left. So this is the heavy ball, okay, and this starts moving towards left with speed u naught. A horizontally moving small ball of mass m strikes it at a height r by 2 above the center while traveling with a velocity u towards the right. So this is a light mass ball and its line of motion is at a distance r by 2 from the center of this heavy ball. Okay. So this is the case. Now in A, what we have to check for after collision, the small ball moves in vertically upward direction with velocity u. It is saying that after collision, so somewhere here it will collide, and after collision, this smaller ball is moving perpendicularly, vertically with a speed u. Prove that this can happen only if u is greater than root 3 u naught. Okay, तो चलो पहले फर्स्ट को नेविगेट करते हैं। कह रहा है कि ये ऐसा जा रहा है और उसके बाद ये कहता है ये ऐसे तभी जाएगा जब u ग्रेटर देन रूट 3 u नॉट है। सो इनइक्वालिटी इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन कोलिजन कॉन्सेप्ट और इनइक्वालिटी को नेविगेट करने के लिए आप हमेशा ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। डन है। सो हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का रेंज ऐसा होता है। डन है। इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड वैल्यूज की अगर आप बात करो तो लेस देन इक्वल टू 1। it cannot be greater than 1, right? So greater than 0 and less than equal to 1 और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। डन है। सो दैट इज केस ऑफ कंप्लीटली inelastic collision, right? So this is the thing. Now let us try writing coefficient of restitution for this case. So coefficient of restitution हम कैसे लिखते हैं? E is equal to velocity of separation. ठीक है। This divided by velocity of approach. So what is velocity of separation? That is relative velocity between two colliding bodies after collision, and this is velocity of approach is relative velocity between colliding bodies before collision. Okay, and also you need to look for who is approaching whom. I mean, in in this case, if you see here, this is moving in this direction with u naught, and this is moving in this direction towards this हेवियर बॉल और यहाँ पे ये कोलाइड करेगा। कोलिजन के बाद ये हेवियर बॉल से दूर जा रहा है। So we can say this lighter mass is approaching this one, or you can say heavier is approaching the smaller one. But separation की अगर आप बात करो, after collision also this ball is moving in this direction, but a smaller one, अगर आप इसकी बात करो, then this is moving away. So sort of a smaller is getting separated by bigger one. Okay. इससे भी पहले इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए फर्स्ट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट दिस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच you will be writing this along which line? So that is line of impact. That is the line along which impulse acts during collision. That is force acts during collision, right? So कौन सा लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट? सो दोनों कोलाइडिंग बॉडीज का सेंटर ऑफ मास आप लोकेट कर लो। सो किया मैंने ड्यूरिंग द moment of collision and then combine these 2 points, combine kiya maine, and here I am getting line of impact. Okay, so this is your line of impact. अब देख लो ये है तुम्हारा एंगल थीटा, let's say, and if you look for initial velocity uh, along the line of impact, so smaller ball का कितना है देखो इस direction में, let's say this angle is theta. So that is your u cos theta. Okay, and heavy का कितना होगा इधर की तरफ line of impact की तरफ u naught cos theta. So with what velocity heavier ball is approaching the lighter one or vice versa. So क्या दिख रहा है तुम्हें? देखो ये दोनों की velocity इधर है ऐसे along the line of impact they are moving. I mean they are oppositely directed. डन है। सो रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? u cos theta minus of minus u cos u naught cos theta, right? So this is what you're going to get. So this is u plus u naught cos theta. So this is your velocity of approach. Now what will be velocity of separation?
देखो अब आप सेपरेशन को यहाँ पे मार्क कर लो, जैसे इस पॉइंट पे कोलाइड किया एंड आफ्टर कोलिजन इट इज गोइंग लाइक दिस स्मॉलर वन, एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट को आप मार्क कर लो, सो दिस इज दिस, डन है। सो आफ्टर कोलिजन आई मीन हेवी बॉल है, हेवी पे ज्यादा असर नहीं होने वाला है कोलिजन का, सो इट विल कीप ऑन मूविंग विद स्पीड यू नॉट इन दिस डायरेक्शन, राइट। क्योंकि देखो आप वॉल की बात कर लो, वॉल पे जब आप बॉल को आई मीन स्ट्राइक करते हो, तो वॉल का मोमेंटम कुछ भी चेंज नहीं होता, आई मीन बिफोर इट इज एट रेस्ट, आफ्टर इट इज एट रेस्ट, राइट। सो आई मीन लाइटर इंटरक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग ऑफ द हेवियर थिंग, डन है। सो या, सो आफ्टर कोलिजन अगर मैं बात करूं, तो आफ्टर कोलिजन देखो इसकी स्पीड इधर की तरफ है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, डन है। सो इसकी स्पीड इधर की तरफ कितनी होगी, यू कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज योर यू साइन थीटा। और हेवी बॉल का अभी भी velocity is in this direction, how much, u naught cos theta. Okay, so clearly you can see this lighter mass is going away from the heavier one, and heavier one is approaching this lighter one still, done है। So who is getting separated, smaller one, so velocity of separation आप क्या लिखोगे, smaller one की velocity, that is u sin theta minus how much, you will be writing this as u naught cos theta. Okay, so this is going to be your velocity of separation. Now let us write things here. Okay, उससे भी पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा, तो थीटा देखो क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्री से आप देख सकते हो, ये ट्राइंगल को आप देख लो, इस ट्राइंगल को, इसको मैं यहाँ पे बनाती हूँ। सो दिस इज दिस, ओके, दिस इज r by 2, दिस इज r, सो दिस साइड विल बी इक्वल टू हाउ मच, r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4, so that is your 3r square by 4 root under. So this is going to be root 3r by 2. So this is root 3r by 2. और अगर ये थीटा है, tan थीटा लोगे 1 by root 3 आएगा, so थीटा is 30 degree, right? Now let us put the values. So velocity of separation तुम्हारा कितना है, अभी अभी हमें मिला, कितना मिला था, u sin 30 minus u naught cos 30. So u sin 30. So u root 3 by 2, right? If I'm not wrong, yeah. So okay, u sin 30, sin 30 तो हाफ होगा ना, क्या कर रही हूँ मैं, या सो u sin 30 माइनस u नॉट cos 30 है, राइट, या cos 30, सो cos 30 कितना होने वाला है, रूट 3 बाई 2, दिस डिवाइडेड बाई u प्लस u नॉट cos 30, दैट इज रूट 3 बाई 2, देखो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, and you are left with what, u minus root 3 u naught by u plus u naught root 3. सो बॉटम टर्म तो पॉजिटिव होगा, अपर टर्म पॉजिटिव कब होगा, आई मीन अपर टर्म, आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और u माइनस रूट 3 u नॉट है न्यूमरेटर में, दिस शुड बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कब होगा, इफ यू विल से दैट u माइनस u नॉट रूट 3 इज ग्रेटर देन 0, डन है। सो u हैज टू बी ग्रेटर देन u नॉट, सॉरी u नॉट रूट 3, कुछ ऐसा ही था ना, हमें हमें दिया हुआ था u is greater than u naught root 3, right? So yeah, we have got that point. Now find the velocity of a small ball after collision if the collision is elastic and the balls are smooth. So अभी ये क्या कह रहा है, अभी ये कह रहा है कि ठीक है, ये बताओ कि collision के बाद स्मॉलर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी अगर कोलिजन इलास्टिक है। तो देखो इंटरेक्शन यहाँ हुआ था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमने बनाया था कुछ ऐसा, let's say now let's say velocity, I mean this smaller ball after collision is going in this direction and it is making certain angle, let us call it I mean phi, let us call it phi, okay. So this is this, and this is the velocity of lighter ball after collision, okay. So if you write the coefficient of restitution thing, so coefficient of restitution 1 है, and velocity of separation कितना होने वाला है तुम्हारा, देखो अभी v cos phi होगा और यहाँ पे u naught cos theta, so that will become v cos phi minus u naught cos theta divided by velocity of approach same as before, so u plus u naught how much, cos theta, okay. So this is this thing, first thing. सेकेंड देखो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, v है एंड फाई है, सो वी नीड टू इक्वेशंस। सो वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, जब कोलिजन होता है फोर्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगता है, सो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटीज आर गोइंग टू चेंज, बट इफ आई ड्रॉ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, देन जैसे कोलिजन में फोर्स लाइटर पे इधर की तरफ लगा, हेवियर पे इधर की तरफ लगा, लाइटर
की बात कर लो, इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, यानी कि इस डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला है फॉर आइदर ऑफ दिस बॉल्स, राइट। इसका तो ऐसे भी हमने चेंज नहीं माना है। सो लाइटर वन की अगर आप बात करो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, force of impact is not along this line, right? So whatever is the momentum along this line before collision will be along this line after collision. So before collision आप देख लो, अगर ये एंगल थीटा है, डन है, so this angle, I mean this is perpendicular to this one, so this is 90, if this is 30, this is 60. सो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम इस लाइन के अलोंग कितना है, u cos 60, और आफ्टर कोलिजन आप देख लो, दिस विल बिकम 90 minus 5, राइट? सो दैट इज योर v cos 90 minus 5, that is going to give you v sin 5, डन है। सो v sin 5 is equal to u cos 60, सो v sin 5 is equal to u by 2, और अगर हम यहाँ से v cos 5 निकाल लेना, v cos 5, तो हमें आई मीन साइन फाइव से कॉस फाइव को निकालने की जरूरत नहीं है। ये अगर हमें पता हो, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, सो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व इट इजिली, ठीक है। सो यहाँ से आप उसी चीज को निकाल लो, 1 इज इक्वल टू वी कॉस फाइव माइनस यू नॉट कॉस थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, सो दिस इज √3/2 डिवाइडेड बाई u प्लस यू नॉट, एंड दिस इज √3/2। अब आप इसको सॉल्व करो, u प्लस यू नॉट √3/2 एंड प्लस यू नॉट √3/2 equal to v cos phi, right? So v cos phi is equal to how much? U √3/2 plus u naught √3/2, u naught √3/2, so that is your u naught √3, right? So this will become how much? I mean √3 को कॉमन ले लो आप, so this will become u plus 2 u naught and this by 2, right? So v cos phi is this one. So let us write it separately. V sin phi, v square sin square phi plus v square cos square phi will be equal to how much? V square sin square phi क्या है तुम्हारा? U square by 4 plus this one 3/4 प्लस 3/4 u प्लस 2 u नॉट का स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू स्क्वायर बाई 4 प्लस 3/4, दिस इज यू स्क्वायर प्लस 4 u नॉट स्क्वायर प्लस 4 u नॉट, दिस, राइट? सो यू स्क्वायर बाई 4 प्लस 3/4 u स्क्वायर, दैट विल बिकम u स्क्वायर, राइट? सो प्लस 3/4 into 4 u naught square, so that will become 3 u naught square plus this will become 3 u naught, okay? So this is v square, right? So v square is equal to how much? V square is equal to u square plus 3 u naught square plus 3 u naught. So v is equal to how much? Root under u square plus 3 u naught ka square plus 3 u naught. This is what we are getting as the answer, okay? So this will be your answer. कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. ओनली थिंग इज यू जस्ट नीडेड टू पे द अटेंशन. So I hope it is clear, but in case you're having any doubt or anything to discuss or say, you can always let me know in the comment section. Keep on solving more number of questions and take care of yourself. Bye bye.